सो थ्रू आउट द लेक्चर वी आर डिस्कसिंग दैट कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उससे इफेक्टेड होता है, बट अगेन वो अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाता है. बट हाउ? सो नाउ वी गॉट द वेरियस फीडबैक मैकेनिज्म्स through which homeostatic regulation is done. Basically, we have uh, two feedback mechanisms. The first one is a positive feedback, and there is a negative feedback. Now come to the this flow chart. The first one, there is a stimuli or a stress, which would lead to disturbances and parameters would change. So change in variable will lead to activation of these feedback mechanisms, either positive or negative. And finally, the responses or effects. These responses would be the normal level of variables. जो external environment की वजह से जो parameters में जो changes आए थे, finally they would reach towards the normal level. That would be called homeostasis. अगर homeostasis जो mechanism है इसमें failures होंगे, then it would lead to dysfunction of various organ systems. Now, the positive feedback system. So, positive feedback system is a process in which the end products of an action cause more of that action to occur in a feedback loop. This amplifies the original action. So, we saw in the previous chart that कि कुछ जो stimuli हैं और जो stress है, that would lead to the changes in वेरिएबल और एंड प्रोडक्ट्स. तो जो एंड प्रोडक्ट हैं वो अपने कॉज या स्टिमुलाई को और इंक्रीज करेंगे और उसको फेवर करेंगे. दैट वुड बी कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. सो दिस एम्पलीफाइज द ओरिजिनल एक्शन. जो जो रिजल्ट्स हैं या जो इफेक्ट्स हैं या जो रिस्पॉन्सेज हैं, दे वुड फेवर द स्टिमुलाई और ओरिजिनल एक्शन. द कॉमन एग्जाम्पल इज द parturition reflex, which is initiated by the oxytocin. So towards term, when the head of the matured fetus presses on the uterine cervix, the cervical distension sends a signal to the posterior pituitary to release oxytocin. Oxytocin increases the excitability of myometrium and causes uterine contraction. During pregnancy, जब ड्यू डेट होता है, देन एट दैट टाइम जो मेच्योर्ड फीटस है तो इट पुट्स प्रेशर ऑन द यूटेराइन सर्विक्स. सो दिस प्रेशर वुड लीड टू डिस्टेंशन ऑफ cervix and send signals to the posterior pituitary to release oxytocin. And further, oxytocin जो release होगा, it would lead to the excitability of myometrium and causes more uterine contraction. And finally, the contraction of uterus further pushes the fetus onto the cervix, and cervical distension further increases the oxytocin, which would be released till the baby is delivered. Now come to the negative feedback system. Most control systems of the body act by negative feedback. So nature prefers negative feedback mechanism because जो positive feedback mechanism है, sometimes it may lead to the vicious cycle. Like if some parameter is increasing, so in case of feedback mechanism it would increase indefinitely, so that would be harmful for our body. So in human body most of the mechanisms are negative feedback systems. Thus in general, if the activity of a particular system is increased or decreased, control system initiates a negative feedback which consists of a series of changes that return the activity towards the normal. So अगर कोई पैरामीटर ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक में जो मैकेनिज्म है वो उस पैरामीटर को इट वुड ट्राई टू ब्रिंग एट द नॉर्मल लेवल. और अगर जो पैरामीटर है वो अपने नॉर्मल लेवल से डिक्रीज होगा, then negative feedback mechanism would bring that lower level towards the normal level. The common examples are the blood pressure regulation. When the blood pressure suddenly rises or lowers, it initiates a series of reactions that try to bring the blood pressure towards normal. अगर ज़्यादा होगा तो उसको
ब्लड प्रेशर को डिक्रीज किया जाएगा, और अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो उसे इंक्रीज किया जाएगा. द सेकेंड वन एग्जाम्पल इज द रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सीक्रेशन विच वुड बी dealt in extensive way in during endocrine systems